मिल जाएगी, तो आप लोग जाके हमारी जो HTML की वीडियोस हैं कभी भी उस पर जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ HTML को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ यार इस वीडियो को कर लो लाइक। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो चलते हैं HTML के इंट्रोडक्शन की तरफ। So hello guys, in this video I am giving an introduction to HTML. First, what is HTML? HTML क्या है? HTML is the standard markup language for document designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as cascading style sheets and scripting language such as JavaScript. Full form of HTML: Hypertext Markup Language is the full form of HTML language. Now, use of HTML. HTML is used to creating a web pages. वेब पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। वेब पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वेब पेजेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। They have HTML commands with an extension .htm or .html. इनके पास HTML का कमांड होता है एक्सटेंशन के साथ .html एक्सटेंशन और .htm एक्सटेंशन। Fourth, HTML is used to convert ordinary text into hypertext. HTML ऑर्डिनरी टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल कोड्स इंक्लूडिंग, सो गाइस ये कोड्स है, कोड्स लिख गया, चलो इसको हम लोग सुधारते हैं। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने PDF क्रिएट करके रखा है। मैंने यहाँ एक तो PDF क्रिएट करके रखा है, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा का पूरा मैंने खुद ही बनाया ये PDF को। इंक्लूड टू कंट्रोल द लेयर अपीयरेंस डॉक्यूमेंट। इट इज, एक और बार पढ़ लेते क्योंकि अब भी प्रॉब्लम आ गई थी। इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल कोड्स इंक्लूडेड to control the layout and appearance of a document. Sixth, this content may be in a form of picture, text, sound, etc. Seventh, it links a component of a document or documents together to compose compound document. Now, features of HTML. First, HTML document are simple text file. Web browser are HTML formatter. Second, compiling is not required in HTML. HTML is not case sensitive. HTML documents are fourth, HTML documents are allowed to be viewed on any type of computer platform. Now next, creating and viewing HTML document. These tools are required to creating and viewing an HTML document. First, text editor. These are programs that are used to create or compose HTML document. Notepad and WordPad are two examples of text editor.
Second, a web browser. This is used to view and display the HTML document. Internet Explorer and Mozilla are two examples of web browser. Third, an optional web server. This is required only in HTML document has to be stored. Next, terms of HTML. 1 minute. Terms of HTML. All HTML documents contains tag and content that make the body of a web page. A tag is an HTML command that controls the format of the page or document. Every tag has attribute or important properties. Now, HTML tags. The HTML tag including 1 minute. The HTML tag include a short tag. This is a short tag. मैं आपको एक बार मार्किंग करके दिखा देता हूँ शॉर्ट टैग कौन सा है. This is a oh no यार 1 minute. कहाँ गए ये रहा. ये जो इन एंड के आगे है ना इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टैग और एंड के जो बाद में है ना उसे हम लोग कहते हैं एंड टैग. मीन्स द प्रीवियस ऑफ एंड इज शॉर्ट टैग एंड द end of end is end tag. Symbols on both sides of the tag command. There are two kinds of HTML tags. First, container tag, also called non-empty tag. Second, empty tag. Now read about container tag. These tags which bracket or contain text or other tag element are called container tag. These consist of two tags, a short tag and end tag. A slash is used to be before the command. आप लोग यहाँ देख सकते हो. This is an start tag. Here your HTML documents means text. This is an end tag. Now empty tag. This tag stand alone and do not contain text or any other tag element, and empty tag functions is stand alone element with an HTML document and does not contain bracket or any time else. For example, BR tag, break tag, etc. Attributes. Some tags have special attributes. They provide various options for the text contained. Attributes were written within angular brackets. A space is provided within two attributes which are written one of them often then. For example, this is for changing the font size and font color, and here your text that you have to change the size and its color. Now the next
1 minute, guys. So now our video is end. So the next part in next video. So please subscribe to my channel. Please, and सो गाइस यार मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सो प्लीज़ लाइक भी कर देना एक ठो. बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. सो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू.